So good evening to all of you. Welcome to RAYACADEMY IAS भुवनेश्वर. समस्त को RAYACADEMY भुवनेश्वर को बहुत बहुत स्वागत. आज हमें डिस्कशन करिबा तुम जो लास्ट एग्जाम हमें करिथिले तार सब रिजल्ट माने आंसर एनालिसिस जो एमसीक्यू हमें परीक्षा देथिले 16 तारीख 16 रे थिला परीक्षा हेतिला बोदे ना 16 तार आज में आंसर टा डिस्कशन करिबा. अच्छा, so question number 1, with reference to the archaeological sites found in the Indian subcontinent, consider the following statements. Statement 1, Mehergarh is the earliest known Mesolithic site where evidence of farming and herding has been found. Option 2, statement 2, Koldiwa, situated along the Belan River, is one of the few Neolithic sites in UP. Statement 3, the cave paintings at Bhimbetka are dated to the Indian Mesolithic period. Question hela, how many of the above statements is or are correct? A, only one, B hela only two, C hela all the three, and D hela none of the above. So which is the correct answer? If we analyze the statements, so Mehergarh, it was the place where the people learned to grow barley and wheat. So Mehergarh is the earliest known Mesolithic site where evidence of farming and herding has been found. So it is so Mehergarh was the place where the people they learned to grow barley and wheat and rearing sheep and goats for the first time in the Indian subcontinent. Barley au semane chaso karuthile wheat tachara semane goat au sheep tako herding karuthile. It is one of the earliest villages. It is a Neolithic archaeological site. It is not Mesolithic. Neolithic period ra thochi Mehergarh. Acha. So this statement it is incorrect. आमे जानि गले एटा हला incorrect. या ऊपर करि हबो. अच्छा, so this is incorrect. Second question, Koldia, the archaeological site in UP, it is situated in the village of river in the valley of river Belan. It is one amongst the few Neolithic sites. Koldia, situated along the Belan river, is one of the few Neolithic sites in UP. So it is correct. This is the correct answer. Koldia, situated along the Belan river, is one of the few Neolithic sites in UP. It was earliest site to provide evidence of rice cultivation. Tara out importance is kono, it is the earliest site where rice cultivation it took place. So it is correct. So we will analyze the statement number 3. Statement number 3, so far as Bhimbetka is concerned, the cave paintings. The present day Bhimbetka is situated in present day Madhya Pradesh, present day MP. It is situated in present day MP. It is dated to the Indian Mesolithic period. The natural caves provided shelter to the people from heat, rain, and wind. The rock shelters, they are very close to the Narmada Valley. Some of the Bhimbetka rock shelters they feature prehistoric caves, painting to the Mesolithic period. So it belongs to the Mesolithic period. So out of Bhimbetka, the cave painting at Bhimbetka are dated to the Indian cave painting katha pacharchi. Ye cave painting katha pacharichi. Bhimbetka cave painting. Sithir taro cave structure bhi achi. Eta painting katha pacharichi. Rock shelters achi. Jo eta kintu painting inside the caves, the cave paintings of Bhimbetka, they are dated to Mesolithic period. Se lekhuchi the present day MP. Ha. Structure टा पुराना केव पेंटिंग टा होता परे हाँ तेणु सेटा हेतिबो पालियोलिथिक हेतिबो मेसोलिथिक हेला तापर नियोलिथिक पीरियड बुझि पाछो तो से लेखुची द ओल्ड साइट द प्रेजेंट डे एमपी इट इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे एमपी दिस इज द ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स जोटा द नेचुरल केव्स प्रोवाइडेड शेल्टर टू द पीपल फ्रॉम हीट रेन एंड विंड रॉक शेल्टर्स आर वेरी क्लोज टू द नर्मदा वैली सम ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स फीचर्स द प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग dating back to 10,000 BC, that is Mesolithic period. So this statement it is also correct. So only 2 are correct. That is answer will be your B. Mehergarh re Mesolithic katha lekhuchi se. Mehergarh is the earliest known Mesolithic site deji. Kintu Mehergarh it is the Neolithic site. It is not Mesolithic site. It farming thila.
से माने बार्ली करथिले व्हीट करथिले प्लस दे हॉटेड द एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट सेतिरे फार्मिंग थिला किंतु क्वेश्चन टा पचारछि कोन वेयर एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड होर्डिंग हैज बीन फाउंड इट इज अर्लीस्ट नोन मेसोलिथिक इट इज नॉट मेसोलिथिक इट बिलोंग्स टू नियोलिथिक पीरियड ठीक अछि तो आमे तीनटा का एनालाइज करले जानि परिया व्हिच इज द करेक्ट आंसर एटा बुझी हला तो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक हाँ पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड अच्छा एटा करेक्ट एटा क्लियर हला अच्छा तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोल्डिया एटा होची यूपी कोल्डिया इट इज इन यूपी आर्कियोलॉजिकल साइट इन यूपी तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2 हैला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and how many of the above statements are incorrect एठी मन रखा पड़ो कोटा से करेक्ट कहूची कोटा इनकरेक्ट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हिच इज करेक्ट हां कोटा माइंड सबले थिबो व्हिच इज द करेक्ट आंसर किंतु क्वेश्चन पचारि जे इनकरेक्ट तनो एटा को टिके मन रखा पड़ो मु भी अंडरलाइन करिछि जे एटा इनकरेक्ट एटा इज इंपोर्टेंट व्हिच इज इनकरेक्ट अच्छा अच्छा देखिया प्रथम हमें स्टेटमेंट 1 The great bath found at Mohenjo-daro was plastered and made watertight with the use of a natural tar. It is the correct answer. Kalibangan is the only site where evidence of fire altars has been found. The people of the Indus Valley, it lagi jaychi. The people of the Indus Valley ऑप्शन नहीं ना ऑप्शन तो ओनली 3 जाके अछि अच्छा एटा क्लियर हैला हमरो द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वाज प्लास्टर्ड एंड मेड वाटरटाइट विथ द यूज ऑफ नेचुरल टार इट इज करेक्ट कालीबंगन इज द ओनली साइट वेयर एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स हैज बीन फाउंड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर अवेयर ऑफ सिल्वर बट गोल्ड वाज नॉट नोन टू देम एथिरे कोन हम देखिबा कालीबंगन वाज नॉट द ओनली साइट was not the only it लिखि कालीबंगन is the only site it is not true कालीबंगन छडा आहुरी अन्य जगह रे भी थिला फायर अल्टर्स भी थिला so this is wrong अछि कालीबंगन is the only site it is not the only site besides कालीबंगन fire altars are also found in other places अच्छा तापरे आ कोन थिला the people of the civilization were aware of silver but gold was not known to them they knew both gold and silver सेमान को लखछि gold was not known to them it is also not true so this is not true this is correct acha third ku jiba unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts Dholabira was divided into three parts eti unlike likhuchi unlike some of the other Harappan cities सेटा होछि कोन Harappan city जो थिला ताको citadel कहउथिले lower citadel कहउथिले किंतु एठी कोन थिला it is correct unlike some other Harappan cities जे दुईटा थिला गोटे होची citadel आ गोटे होची lower citadel किंतु एठी कोन थिला it was divided into three parts this is correct lower citadel middle citadel out is upper citadel then unlike some of the other Harappan cities which are divided into two parts Dholabira was divided into three parts then amara dita correct asla 1 and 3 so only 2 ठीक अछि हाँ कोटा पचारछि इनकरेक्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हमर केवल 2 ओनली 1 सब आंसर करी करी कि जिबा लास्ट को सेटु पुनी देखिबा जे व्हिच इज करेक्ट कोन कहू जा देखो को मोर तो किछ काम मुख जानि गल जे खाली स्क्रॉल करिया कथा ताउ तो किछ नै एतिकी तो एटा बुझियला तो इनकरेक्ट अछि हम सब आंसर करि देले किंतु माइंड को पड़ले जे व्हिच आर करेक्ट तनो एटा गुटिके माइंडफुली की रखिया पड़ियो से समय रे हां हां अच्छा point 3 is also there here the people of the Indus Valley civilization
were aware of silver, but gold was not known to them. It is also wrong. It is not correct. Both gold and silver was known to them. So only two are correct and another two are wrong. ठीक अछि, incorrect. हमें only two लिखिले, एटा भी हमर आंसर ठीक अछि, किंतु this is the fourth point. First, second, third, fourth चारटा स्टेटमेंट अछि एथिरे. ठीक अछि. तापर हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. एकदम केयरफुल नहले तुमे मिस करि जिवो. अच्छा. Consider the following pairs. Early Harappan site in column A, in column B you have well known for. One is Mohenjo-daro, well known for evidence of lost wax technique in craft making. Lothal, important center for stone and metal working. Rakhigadi, it is the earliest known site for cotton cultivation. How many of the above pairs is or are correctly matched? First time dekhiba. One, Mohenjo-daro, it is well known for evidence of lost wax technique in craft making. It is right or wrong? It is correct. What is lost wax technique? Lost wax technique. केमती कौन तार प्रोसेसटा कौन सेटा प्रथमे गोटे सेटा तयारी हबो कोथिरे प्रथमे wax रो गोटे ना wax रो गोटे जे कोनसी आमे तयारी करिबा गोटे माने स्टैच्यू हेला गोटे wax रो स्टैच्यू रे तयारी हेला तापर क्ले रे ताको एम्बाल्मिंग करा गला ता ऊपर क्ले माटी दिया जीवो तापर ताको हीट दिया जीवो हीट गले ए जो wax ता मेल्ट करी गला बाकी जोटा रहिला सेथिरे से माने ब्रोंज देकी तयारी करिवे सो दिस इज द मेथड सो हा खाली हमर क्ले टा रहि गला माटी टा wax हां क्ले रे जो छांचटा सी छांच रे ब्रोंज रा मूर्ति टा तयारी हबो ए जो डांसिंग गर्ल मूर्ति जो बाहरी छि मोहनजोदा नटराज आउ डांसिंग गर्ल स्टैच्यू एमती तयारी हिची so that this method is known as lost wax technique. So how technologically they are also advanced 5000 years ago. That is the best example of Harappan civilization. Technically they are so much advanced. माने जो टेक्निकल नॉलेज से मानकर केति थिला केते एडवांस से माने थिले सो आमे देखिबा मोहेंजोदारो इट इज वेल नोन फॉर एविडेंस ऑफ लॉस्ट wax एई टेक्निकटा जे न जानथिबो बुझी परिबनी जे लॉस्ट wax टेक्निक कोन सेटा पुनी जो मूर्ति तैयारी होउची सेमा तक wax रे मूर्ति तैयारी करिवे ता ऊपर गोटे तक कवर करिवे गोटे क्ले माटी रे बा कादुआ रे तापर तक हीट देबे हीट देले क्ले टा रहिला wax टा मेल्ट करि गला से जो क्ले रे रहिला तार जो ता कोन कहू कवर टा केवल सेइथिरे से माने मूर्ति तैयारी करिवे सो दैट इज नोन एज द लॉस्ट wax टेक्निक द wax इज लॉस्ट हां 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 डांसिंग गर्ल जो स्टैच्यू बाहरी छि मोहनजोदारो इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन द सेम मेथड अच्छा सेकंड इज लोथल इंपोर्टेंट सेंटर फॉर स्टोन एंड मेटल वर्किंग लोथल तो डॉकयार्ड थिला तार आउ इंपोर्टेंस कोन अछि लोथल रो एटा होछि क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट कोन अछि लोथल इज so it is also correct lothal is also correct it was a dockyard but it is also famous it is important a center for stone and metal work pai mother lothal ta bi famous thila acha rakhigadi it is earliest known site for cotton cultivation कोठी होतिला सेटा कोठी थिला cotton so the it is correctly matched हैला एटा correctly matched lothal is also correctly matched तापर हम जिबा राखीगड़ी को the first evidence of cotton cultivation in Indian subcontinent came from a site known as it is not Rakhigadi. What is that place? Mehergarh. Rakhigadi. This place is Mehergarh. That is the earliest place known for cotton cultivation. 7000 years ago. Mehergarh. So it is not matched correctly. ताले हमर आंसर कोन हैला only 2 that is B एटा बुझियला आउथरे कहि दोची सो मोहेंजोदारो
It is famous for lost wax technique in craft making. It is matching. Luthal, though it was a dockyard, because it was also an important center for stone and metal working. Third is Rakhigadi. The option is well known for earliest known site for cotton cultivation, but cotton cultivation for the first time it was found in Mehergarh in 7000 BC. 7000 years ago. Not 7000 BC, 7000 years ago. Mehergarh re thila cotton cultivation. We'll go to the next question, that is question number 4. Consider the following statements with reference to the Indus Valley civilization. Some of the raw materials for craft making, such as gold, silver, and precious stones, were locally available in abundance. Tin was imported. Tin was imported from Afghanistan and Iran to the cities of the Harappan civilization, where it was combined with copper to create bronze. So, which of the statement given above is correct? So the first statement, some of the raw materials for craft making, such as gold, silver, and precious stones, were locally available in abundance. Locally available thila ki? It is right or wrong? The statement, some of the raw materials for craft making, such as gold, silver, and precious stones, were locally available in abundance, is not correct. Locally available nathila. Available, but it is not locally available. While some of the raw materials that Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones, they had to be brought from distant places. Local available thila, but it was not only locally available. हाँ प्रचुर नथिला तेणु बाहर आसुथिला जिंस कोन आसले बाहर such as gold, silver, and precious stones were locally available in abundance is not correct. While some of the raw materials that the Harappans were available locally, many items like copper, tin, gold, silver, and precious stones, they had to be brought from the distant places. So this is not correct. Second is, tin was imported from Afghanistan and Iran to the cities of the Harappan civilization, where it was combined with copper to create bronze. So far as the second statement is concerned, the statement tin, it was imported from Afghanistan and Iran to the cities of the Harappan civilization, where it was combined with copper to create bronze, it is correct. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from the present day Afghanistan and Iran. Tin was imported from Afghanistan and Iran, and it was mixed with copper to convert it into bronze. Tin re copper मिसेकी से bronze से convert करुथिले, and it was imported from Afghanistan and Iran. ताले इतरे कोटा आसले हमारा correct answer? Two only. नहीं तामाने एटा हबो एटा टू ओनली हबो सेटा ओनली टू अछि ओनली टू पनी टी डब्ल्यू ओ एटा बुझी पाछो तो दिस इज एटा ए वन टा यास तो लिंक करूची ए टू टा यास टू से लिंक करूची एटा नंबर को लिंक करूची जदी थिबो टू एम्टी ताले दुईटा स्टेटमेंट ठीक अछि ओनली टू माने दुईटा स्टेटमेंट ट्रू हैला एटा अछि टू ओनली तेनु आमे तीनटा ऑप्शन तीन प्रकार देखिले हैला गोटे होची स्टार्टिंग रछि हां सब स्टेटमेंट को फॉलो न कले आमे पहुंच परिबानी कंक्लूजन रे पहुंच परिबा नाही अच्छा एटा बुझिला क्वेश्चन नंबर हाँ ओनली वन हेले ओ एन ई अछि वन ओनली माने इन लेटर अछि न्यूमेरिक नंबर अछि तेनु न्यूमेरिक नंबर हेला हमर टू ओनली एटा होछि करेक्ट आंसर ठीक अछि
tin was imported from Afghanistan and Iran to the cities of Harappan civilization and it was mixed with copper to create bronze. এটা হলো কোশ্চিন নম্বর 4। তারপর আমি যাবা কোশ্চিন নম্বর 5 কু। তারপরে আমি আসলে কোশ্চিন নম্বর 5। Consider the following statement. Statement 1 है the people of the Harappan civilization were aware of drought resistant crops such as wheat and barley as the region did not receive heavy rainfall. Statement 2, the Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture as they lacked the knowledge and practice of irrigation. এটা কোন তার স্টেটমেন্ট এগুলা কা আনসার এটি? আচ্ছা देखिए the people of the Harappan civilization were aware of drought resistant crops such as wheat and barley as the region did not receive heavy rainfall. So statement 1 कौन है? The people of the Harappan civilization were aware of drought resistant crops such as wheat and barley as the region did not receive heavy rainfall. Heavy rainfall receive करू नथिला. This is correct. এটা correct अछि. Which of the following is correct? Statement 1 is correct. Statement 2, the Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture as they lacked the knowledge and practice of irrigation. Statement 2, the Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture as they lacked the knowledge and practice of irrigation. It is incorrect. It is incorrect. काहे की? Irrigation से मन को तो जाना थिला. Irrigation से जाना थिला. तो इटा wrong answer. इटा wrong statement. The Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture as they lacked the knowledge and practice of irrigation. They had the knowledge of irrigation. They had the knowledge of they did not lack the knowledge of irrigation. तेनु irrigation ताको जाना थिला से समय रे. तेनु कोटा भूल अछि. The Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture as they lacked. No, एटा नो. अच्छा, तापर आमे जिबा conclusion को. Which of the following is correct? The both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. এটা তো নো. both কোটি correct हैला. both statement 1 and 2 are correct. এটা তো নো. both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. both are not correct. আমি both are not correct আমি জানি গলে. CST statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. এটা ঠিক আছে. Statement 1 is incorrect. So answer is C. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. এটা হচ্ছে কি? এটার কিছু অপশন নাই দেখো. এটা পুরা স্টেটমেন্ট কো বেস করি কোশ্চেন আছে. এটা আউট প্রকার পুনি কোশ্চেন তা ভিতরে. ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোশ্চেন. তারপর আমি ଯିବା নেক্সট কোশ্চেন কো. এটা ডিসকাশন করলে মজা লাগুଛି. একুটা পঢ়িবা অপেক্ষা. একুটা পড়লে আচ্ছা, among the listed ancient towns which of the following pairs is renowned for having an intricate signboard written in the Harappan script and a tidal dockyard respectively? এটা কালি স্যার সাথে কথা হউতলি. কালি সন্ধ্যা বেলা স্যার ফোন করতিলো কথা হউতলি. মু কলি এটা আখি বুঝি কি এইটি সিধা মার দেবা বলি করি কহিলি. কিন্তু তাকু আউতে অ্যানালিসিস দরকার. এটা কোন পচারি দেখো. among the listed ancient towns which of the following pair is renowned for having an intricate signboard written in the Harappan script and a tidal dockyard respectively? Hela Harappan script ta kouthi achi a bitoru? Renowned for having an intricate signboard written in the Harappan script. Nobody has deciphered Harappan script. Kintu Harappan script achi kei पढ़ी पारि नाहति पंता को सिना. Kintu script is there. Harappan script is there but it has not a deciphered. हाँ, decipher है ना. DECIPHER.
disciple अच्छा किंतु एठी पछरची कोन among the listed ancient towns which of the following pair is renowned for having an intricate signboard written in the Harappan script एटा गोटे and a tidal dockyard respectively तेनु एई भितर कोटा थिबो प्रथमटा थिबो हरपान साइन बोर्ड इंट्रिकेट साइन बोर्ड written in the Harappan script एटा थिबो प्रथमटा सुरकटोड़ा and ढोलाबिरा रोपार कुंटासी and ढोलाबिरा and लोथाल and बस dockyard पुनी respectively तेनु first will be the Harappan script second place will be a dockyard तेनु आउ किछि आखि बुझी करी आउ तो dockyard ढोलाबिरा dockyard थिला कि किंतु लोथाल तो dockyard थिला अच्छा ढोलाबिरा ठीक अछि तुम आंसर अनुसार ढोलाबिरा जदि भी थिला डॉकयार्ड ए जो कुंटासी एटा होई तो हरपान स्क्रिप्ट न थिला हां अच्छा अच्छा लिखि से हां एटा छि ढोलाबिरा The city of Dholabira, it is located in the run of Kutch, where there was a fresh water and fertile soil. Dholabira was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Dholabira's importance. Other finds include large letters of Harappan script that are carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. Then Harappan script Dholabira ru bahariche. Se likhu Dholabira टा कहीं तो लिखुनी डॉकयार्ड बोली से लिखुनी हरपान डॉकयार्ड बोली अच्छा अच्छा किंतु सिटी ऑफ लोथाल इज स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात एटा गोटे डॉकयार्ड थिला होची लोथाल तेन ढोलाबिरा वाज वेयर वी फाइंड द साइन बोर्ड रिटन इन द हरपान स्क्रिप्ट एंड ए टाइडल डॉकयार्ड इट इज इन लोथाल सो आंसर विल बी among the listed D will be your answer एमती पड़ले जी माने ऑप्शन पाई एथर कंफ्यूज हबार किछ नाही ऑप्शन ने कंफ्यूज हे परिबनी एथुर जदी एमती ए बी सी डी देगला 1 2 3 4 ओनली 1 ओनली 2 एम जदी पड़ला कंफ्यूजन टिके ढोलाबिरा एंड लोथाल तापरे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को which one of the following is not an early Harappan site is not an early Harappan site Siswal Damsad Amri Sohagura नाटा तो एबे सुनिली सोहागुरा अच्छा सोहागुरा होची इट इज नॉट एन अर्ली हरपान साइट काहे कि ना सिसवाल इज ए विलेज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इट इज द अर्लियर साइट ऑफ हरपान सिविलाइजेशन हरपान एज सिसवालटा थिला अच्छा डमसाडट it is an archaeological mound and ancient settlement in the Baluchistan region of Pakistan. It is a early Harappan site. Amri hochi kono, it is an ancient settlement of modern day Sindh in Pakistan. Amri hela Sindh, modern day Sindh. Au Damsadat hela Baluchistan. आउ सिसवाल है हरियाणा एंड सोहागुड़ा कोठी हाँ इट इज यूपी अच्छा यार आ इंपोर्टेंस कौन अच्छी सोहागुड़ा रो परवर्ती समय रे सोहागुरा राव कोन इंपोर्टेंस अछि गोटे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट कॉपर प्लेट ताम्र फल को जो कहउचंती सोहागुरा रु मिलिछि सोहागुरा होछि इट इज इन यूपी एते कोन इंफॉर्मेशन मिलिछि कहार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लैंड ग्रांट जो दिया होतिला फिर जो प्राकृत लैंग्वेज रे मिलिछि प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सुहागुरा कॉपर प्लेट आउथरे डिस्कशन कर देबा आउथरे डिस्कस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली हरपान साइट सिसवाल इट इज सिचुएटेड इन मॉडर्न डे हरियाणा डमसाडट इट इज बेलूचिस्तान इन पाकिस्तान
Amri, it is also seen in Pakistan, and Sohagura, it is situated in UP. So, which of the following is not an early Harappan site? Sohagura, it is not an early Harappan site. Sithre gote copper plate inscription milichi, it is written in Prakrit language and Brahmi script. Early Harappan site katha, ha, early Harappan site mane नहीं, अर्ली हरप्पान साइट माने प्री हरप्पान पीरियड और पोस्ट हरप्पान पीरियड गोटे हरप्पा गोटे कोटा माने अर्लियर साइट गुड़ा एगुड़ाक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली हरप्पान साइट सो सोहागोरा इट इज नॉट एन अर्ली हरप्पान साइट कहीं ना सेठी जो मिली कपर प्लेट से प्राकृत लैंग्वेज कोड आसिला इट इज सिचुएटेड इन यूपी इन मॉडर्न डे यूपी और नथिला प्राकृत लैंग्वेज मौर्यन पीरियड जाके आसुची तेनो मौर्यन पीरियड जो किसी इनस्क्रिप्शन अच्छी मौर्यन पीरियड बारे अशोक विषय हुए तो होता पारे मौर्यन रूल विषय किसी होता पारे किसी लैंड ग्रांट देइथिबे जदी से विषय किसी होता पारे तेनो एटा होची सेति लैटर हरप्पान साइट हरप्पान समय नुह एटा ए जो सोहागुराटा इट इज नॉट द हरप्पान इट डज नॉट बिलोंग टू द हरप्पान पीरियड एटा होची पोस्ट हरप्पान पीरियड सेति पहुंची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली हरप्पान साइट एटा अर्ली हरप्पान साइट तेन नथिला कारण से प्राकृत तार प्रमाण होचे एटा गोटे तार क्लू कोन ना सेठी जो कपर प्लेट मिली छी इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो एटा अर्ली हरप्पान साइट नथिला अर्ली हरप्पान साइट तो पढ़ाई पारिनी अर्ली हरप्पान स्क्रिप्ट इट हैज नॉट ए डिसाइफर्ड तो कौन लिखाई छी को लैंग्वेज लिखाई छी जणा पड़िनी पर्यंत किंतु जेतु सोहागुरा जोटा मिली छी कपर प्लेट आज इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट सो इट इज नॉट द अर्ली हरप्पान साइट एटा क्लियर हे गेला तार जेतु हम पाखे गोटे एविडेंस अच्छी सोहागुरार एविडेंस होची जे प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट रो गोटे कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन मिली छी कपर प्लेट माने ताम्र फलक कपर प्लेट सब देखिथिबो त माने सब राजा माने जो सब ताम्र फलक ग्रांट करंती सब तंबा जो लिखा हिथिबो हां तंबारे सब लिखा हिथिबो से सब लिखा हिथिबो जेमति इनस्क्रिप्शन लिखा होची पत्थर रे लिखा होची रॉक एडिट लिखा होची सेमति सेरा ताम्र फलक लिखा त इनस्क्रिप्शनटा तंबा ताम्र पट्टा जो कहती ताम्र पट्टा so sohagura मिली in UP so it is not an early Harappan site तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को that is question number 8 with reference to the agricultural technologies of the Indus Valley civilization consider the following statements most Harappan sites are located in the semi arid lands where irrigation was probably required for agriculture so traces of canals have been found in Punjab and Sindh. Terracotta models of plough have been found at sites in Cholistan. The evidence of a ploughed field found at Kalibangan had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. With reference to agriculture technology, consider the following statements. तापर तार ऑप्शन कौन देची How many of the above statements is incorrect? How many of the above statements are incorrect? कोटा incorrect हमें देखिए तापरे Most Harappan sites are located in the semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. So traces of canal have been found in Punjab and Sindh. It is question number 8. Question number 8. Statement 1. Acha. Most Harappan sites are located in the semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture. Where irrigation was probably required for agriculture. हाँ इटा ठीक अच्छी इटा करेक्ट ना ना traces of canals have been found at the Harappan site of कोट लिखी पंजाब एंड सिंध नुह पंजाब एंड सिंध इटा नुह कोट मिली irrigation probably required for agriculture. So traces of canals have been found in Punjab and Sindh, not in Punjab and Sindh. Traces of canal कोट हमको देखिबा को मिली they are found in not in Punjab and Sindh. Sattughai
Sartughai, it is situated in Afghanistan, present Afghanistan. So most Harappan sites are located in the semi-arid land, where irrigation is probably required for agriculture. So traces of canals have been found in not in Punjab and Sindh, but in Sartughai in Afghanistan. It is gote jinsa. Then it is wrong. Terracotta models of plough have been found at sites in Cholistan. Statement number 2. Statement 2 hela kono? It is correct. Terracotta models of plough have been found at sites in Cholistan. Cholistan kouti? Cholistan Pakistan re. Pakistan pakapaki. In Cholistan. ता छड़ा आउ कोठी मिली बनवाली बनवाली रे हरियाणा. In both the places, terracotta models of plough have been found at Cholistan. Eta ठीक अछि. The evidence of a plowed field found Kalibangan had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops are grown. ए जो furrows माने कौन? लंगल जो गात कर सेटा लंगल तो कौन कह जाए ओडिया तो कौन कह जाए दुईटी सारी हाँ खात जो गात कर देखि से भावुंट जे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. So the evidence of a plowed field found at Kalibangan had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops are also grown. Then multi crops भी होउथिला सेठी, but two different crops are also grown. एटा होसी करेक्ट आंसर. एटा भी करेक्ट अछि. ताले हमर आंसर कोन आसिला से पचारछि कोन इनकरेक्ट. Which is incorrect? Only one is incorrect. ठीक अच्छे. Only one is incorrect. एटा बुझी पाला तो टेराकोटा मॉडल्स जो चोलिस्तान टा होची पाकिस्तान अंतर्गत आ गोटे जगह होची बनवाली दैट इज इन हरियाणा. ये केवल लिखी छी टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हैव बीन फाउंड. ना ना एटा नॉलेज एटा भी दरकार. एटा ठीक अच्छे. अबे बिसाइड्स चोलिस्तान इट आल्सो फाउंड इन बनवाली. एटा एक्स्ट्रा पॉइंट गोटे तार. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान. इट इज करेक्ट. बिसाइड्स चोलिस्तान another place is Banwali where you also find the terracotta models of plough, that is Banwali in Haryana. एटा एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन या संगे किसी लिंक नहीं तार किंतु एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन गोटे. तेणु एटा रॉन्ग नहीं. एटा ठीक अच्छे. जदि ओनली लिखि थांता ताले रॉन्ग थांता. ओनली इन चोलिस्तान से लिखिनी फाउंड इन चोलिस्तान लिखिछि. ए बुझिला तो गोटे कोठी गोटे ओनली भी अच्छी. गोटे क्वेश्चन सिम्पल अच्छी. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान. So it is in Pakistan. Besides Cholistan, we also find the terracotta models of plow in Banwali, that is in Haryana. किंतु आंसर टा हला एटा कोन ना एटा होची सटुघाई इन अफगानिस्तान. तापरे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट आंसर कोटा हला हमरो ओनली वन, दैट इज इनकरेक्ट. मुझे देखी थी पिला माने कौन थी वो. हाँ ठीक अच्छे. तापर हम जा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा. With reference to the craft production of the Indus Valley civilization, consider the following statements. Craft production को लेकर. अच्छा. चानुदारो was devoted to craft production. Where क्या लिखला? Chanudara was devoted to craft production, including bead making and shell cutting. Nageshwar and Balakot were the specialized centers for making shell objects, like including bangles and ladles. Which of the statement given above is correct? Question number 9. Statement 1. Chanudara was devoted to craft production including bead making, shell cutting, तापरे metal working भी थिला सेठी, तापरे metal working, seal making और weight making ये सबुड़ा से थिला. So it is correct.
Chanudara was devoted to craft production, including not only bead making. Bead making कौन? Bead माने ये जो माली तो bead, ये जो 108 माली सेटा होची bead making and shell cutting. Shell cutting कौन? हाँ, shell cutting, samuka. So Chanudara, it was devoted to craft production, including bead making, shell cutting. ता छड़ा भी थिला, metal working थिला, seal making भी थिला, weight making एसो थिला, weights and measures. Nageshwar and Balakot were the specialized center for making shell objects, including bangles and ladles. Nageshwar and Balakot. Statement 2. Nageshwar and Balakot, they are specialized center for making shell objects, including bangles and ladles, and inlay where was taken to other settlements. The finished products such as beads from Chanudara and Luthal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. ठीक अछि, एटा भी correct अछि. Nageshwar and Balakot, they are also specialized centers for making shell objects, including bangles and ladles. Shell, bangles and ladles. Ladles कौन? जेपर कि चूड़ी हांडी तैयारी करे पे विशेष केंद्र थिला. हांडी लाडल्स ए जो पॉट अर्दन पॉट ता कोन को टेराकोटा को जो माने माटी को पोड़ी की जो तैयारी करंती बैंगल्स और लाडल्स. लाडल होची हांडी पॉट. So with reference to the craft production of the industrial civilization, consider the following statements which is correct. Which of the following given above is correct? Chanudara, it is correct, were devoted to craft production, including bead making and shell cutting. It is correct. Nageshwar and Balakot are the specialized centers for making shell objects, including bangles and ladles. It is also correct. So answer है both 1 and 2. Both 1 and 2 are correct. तापर हमें जीवा next question, that is question number 10. With reference to the Mesopotamian text, consider the following statements. This text, Mesopotamian text, this text refers that copper coming to the Harappan region from a place called Dilmun. This text also, that Mesopotamian text also refers to Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers. Which of the statements given above are correct? Question number 10. The statement 1, प्रथमे देखिबा. The recent archaeological finds, they suggest that copper was probably brought to Harappa from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula. Oman ru asuthila. The text refers that copper coming to the Harappan region from a place called Dilmun. Seta Dilmun ru seta Dilmun probably island of Bahrain. Bahrain. Dilmun hochi Bahrain re. An island Bahrain. Se kochi this text refers that copper coming to the Harappan region from a place called Dilmun. Tero Dilmun ru asu nothila. Copper, it has brought to the Harappan region from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula. दिलमुंडा जेमती गोटे माने फॉरेन कंट्री होची बाहरिन से ताकू मीन करके पचारुची नल तो राजस्थान कहि थांता से. This text, the Mesopotamia text, it refers that copper coming to the Harappan region from a place called Dilmun. It is wrong. It came from both astula. Rajasthan astula, Oman. Not Dilmun. It came from Oman. See the same Mesopotamia text. It also refers that Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers. Land of the seafarers. Seafarers कौन? तो एटा हमर wrong हे गला. एटा wrong हे गला. तापर देखिए statement 2. The text Mesopotamia text, it refers to Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers. माने seafarer ने समुद्र को यात्री जमाने भय न करिकरी साहसी जमा दुसाहसी समुद्र को यात्रा में जमाने दुसाहस से माने को कहते seafarers.
अच्छा, the text also refers to Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers. এটা ঠিক আছে। মেলুহা কোঠি? কোঠ মেলুহা? মেলুহা লিখুছি কেবল যে হরপান রিজিয়ন বলে লিখুছি, পসিবলি দ হরপান রিজিয়ন টু মেলুহা। এইটা যাহা মেলুহা পুরা লিখিছি এতিকি। সেই অঞ্চলর হ্যাঁ। মেলুহা পসিবଲି ଦ ହରପାନ ରିଜିଅନ୍ as a land of the seafarers। ତେଣୁ ମେଲୁହାର କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମେସୋପଟାମିଆ ଟେକ୍ସଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଦ ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଫେୟାରର୍ସ। ସମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଃସାହସୀ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ। ହରପାନ ରିଜିଅନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା ମେଲୁହା। ମୁଁ ତ ହଁ, ମେଲୁହାଟା ହଉଛି ପସିବଲି ଦ ହରପାନ ରିଜିଅନ୍, ହରପା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମେଲୁହା। refers to Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers। তাহলে আমু কোটা করেক্ট হেলা তবে only two only। এটা টিকে ডিফিকাল্ট আছে কোশ্চেন নাই কি? with reference to the Mesopotamian text, consider the following statement gala। statement 1 la, this text refers that copper coming to the Harappan region from a place called Dilmun। it is wrong, copper came from island Bahrain। acha, the text also refers to Meluha, possibly the Harappan region, as a land of the seafarers। this is correct, so 2 only is the correct answer। তারপর আমি যাবা নেক্সট কোশ্চেন। with reference to Vedic period, consider the following statements। acha, how many above statement are correct? first statement है the Rig Veda is the earliest text of the Indo-European languages and contains the collection of prayers offered to various gods। Indo-European language, earliest text of Indo-European language, এটা correct কি নাই? and it contains the collection of prayers offered to various gods। ঠিক তো আছে এটা, কিন্তু আমি দেখা Indo-European language ଥିଲା কি নাই? ঋগ্বেদর প্রেয়ার টু গড ଅଛି না, গড মানে নেচর। ঋগ্বেদর তো নেচর ওর্ସିପର ନା ସେମାନେ ଥିଲେ, जो अर्थ सन मून प्लानेट स्टार्स ए सब है वाटर एयर ए सब है से डेडिकेट कराइला प्रेयर सब। अच्छा, ऋग्वेद इज द अर्लीएस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हाँ, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होची कोन? इट इज रिटन इन संस्कृत। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज रो गोटे पार्ट होची संस्कृत। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज। এটা যদি আমি যদি ইন্ডো ইউরোপিয়ান को संस्कृत बोली माइंड नथिबो ताले मैं कहबा भूले गेला बोली कि इंडो पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सो ऋग्वेद इज द अर्लीएस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैला संस्कृत and contains the collection of prayers offered to various gods। এটা correct। women are not allowed to participate in the assemblies during this period। ঋগ্বেদ কইছি, এটা হচ্ছে the Rig Veda। with reference to the ना क्वेश्चन टा देखो ऊपर है, with reference to the Rig Vedic period। Rig Vedic period से मान को अलाउ थिला, later Vedic period restriction आसिला। अच्छा, women were not allowed to participate in the assembly during this period। এটা নুহ, এটা wrong। Naditama, another name of the Indus river, is mentioned in the Rig Veda। नादितमा होची आ गोटे नदी, माने तार ना अनदर नेम ऑफ द रिवर। हाँ, नदी कर्ण, नदी तर्ण ओ TARN এটা লাগি যাইছে। नदी तमा अछि तो नदी तमा अछि, এটা হচ্ছে রিভার সরস্বতী। এটা ইন্ডাস রিভার, দিস ইজ রং। এটা বুঝিলা? The Rig Veda is the earliest text of the Indo-European language, this is correct।
It contains the collection of prayers offered to various gods. प्रार्थना अछि देवदेवता मानक पई ऋग्वेद रे. Second hela, it is one is correct. Second, women are not allowed to participate in the assembly during this period. During Rigvedic, eta nathila. Then this is wrong. Women are not allowed. Naditama, another name of the Indus River, is mentioned in the Rigveda. It is not Indus River, it is the river Saraswati. So it is also wrong. Tale hela only one. 11 hela only one. Only one. Nadi Tarna. TARNA. नदी तरना एथरे कोन ओडिया रे कोन लिखछि नदी तमा लिखि दी छी नदी तमा हां नदी तम त माने गुलगु देखु नथिबो होय त एटा आर और एन थिबो लागि कि एम पर दिसछि एमथि हेते पारे TARNA एठी आर हे जिवो एति के तब सेमति भी रहियो बस बोथ आर करेक्ट एटा बुझिला सो ओनली वन ऋग्वेद अर्लिएस्ट टेक्स्ट इंडो यूरोपियन दैट इज संस्कृत लैंग्वेज एटा करेक्ट वुमेन आर नॉट अलाउड दिस इज रॉन्ग नदी तर्ण इट इज रॉन्ग बिकॉज़ इट इज सरस्वती सो ओनली वन इज करेक्ट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा with reference to the ancient history of India, consider the following statements. Achha. The Battle of 10 Kings was fought on river Purusni and it established the supremacy of the Bharatas. Bharatas na Bharatas? Kon kota thik? Bharatas puni ke? The earliest king. He was Bharata. Taka naam ansare Bharata hoichi. The Battle of 10 Kings was fought on river Purusni and it established the supremacy of the Bharatas. Tribal conflicts during the Rigvedic period were mainly religious in nature, arising from disagreements over rituals and sacrifices to appease the gods. Which of the statements given above is correct? The Battle of 10 Kings. It has question number 12. The Battle of 10 Kings. First ठीक अछि. Statement 1 is correct. The Battle of 10 Kings was fought on river Purusni and it established the supremacy of the Bharatas. Statement 2. Two ta correct अछि नाही ना 8 भूल अछि ए जो वार थिला एटा तार कारण कोन थिला The tribal conflict during the Rigvedic period were mainly religious in nature, arising from disagreement over rituals and sacrifices to appease the gods. It is religious in nature nathila ba god manu ko appease करे पे नथिला सेटा कोन थिला हां नाही गोटे होची टेरिटरी दैट इज लैंड एंड रिसोर्सेस The Battle of 10 Kings was fought on river Purusni, it is correct, and it established the supremacy of the Bharatas. Supremacy of the Bharatas and Bharatanकर वंशधर जो आसिले सेमान को भरतज बोली कह जाउतिला भरतर वंश तांका नाम अनुसार हिज भारत वर्ष हां एटा करेक्ट अछि Tribal conflict during the Rigvedic period were mainly religious in nature, arising from disagreements over rituals and sacrifices to appease the gods. It is not correct. Correct is mainly. It was not mainly religious in nature. The conflict started. The conflict during Rigvedic period were mainly concentrated on the land and resources. गोटे होची सेमानकर एरिया आ गोटे होची सेमानकर माने स्टेबिलिटी जो कहछन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सो लैंड एंड रिसोर्सेस ताकू नै कि सेमानक भीतर हेतिला कॉन्फ्लिक्ट द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कहूची Tribal conflict during the Rigvedic period were mainly arising over control of land and resources. तांका भीतर युद्ध होइतरा सेति पई. The tribal conflict during the Rigvedic period
ऋग्वेदिक पीरियड ट्राइबल माने एक्चुअली सैक्रिफाइस रिचुअल्स फॉलो करनते तमन दस्यु कोथले माने निजु आयरन कोथले तो समान को भितर लिखा है कि दस्यु दे आर नॉट पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस इन क्रॉस स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज लेटर्स माने दास होले तार रीजन टा कोन से जदी सैक्रिफाइस करनते सर रिलीजियस को बिलीव भी करनते हां एटी तो मेन कॉज रिलीजियस को माने सेमानकर रिलीजियस को नेकरी नथिला कॉन्फ्लिक्ट ला लैंड और रिसोर्सेस को नेकरी The tribal conflict during the Vedic period were mainly religious in nature, arising from disagreement over rituals and sacrifices to appease the gods. ना ना ये जो disagreement over एटा होची क्वेश्चन disagreement over rituals नथिला ताकर वार ता प्रकृति रे religious in nature थिला but not concentrated on sacrifices to appease the gods. Tribal conflict during the Vedic period were mainly religious in nature, arising from disagreements over rituals and sacrifices. Mainly it concentrated economy सेटा उठ थिला लैंड होची टेरिटरी रिसोर्सेस तेनु टेरिटरी को नेकी तांको भितर कॉन्फ्लिक्ट थिला were mainly arising over control of land and resources. आर्यन्स आउ दासस बा दस्युस बोली कहउतला जो माने नॉन आर्यन्स जो माने ताको दासस बोली कह जाउतला तो तांको भितर जो कॉन्फ्लिक्ट थिला मेनली इट कंसंट्रेटेड ऑन लैंड एंड रिसोर्स नॉट रिलीजन ए माने रिलीजन जो माने दस्यु थिले आ ए माने जो माने सेपरेट जो माने आर्यन्स थिले दे बिलीव्ड ऑन रिलीजन एंड गॉड्स हैला कि जो माने नॉन आर्यन्स थिले से माने चाहउतले टू एक्वायर प्रॉपर्टी टू एक्वायर लैंड टू एक्वायर रिसोर्सेस. So that was the main reason as to why the tribal conflict started during the Vedic period. तेनु religion को नेकरी बा rituals को नेकी तांकर conflict नथिला. Conflict थिला to acquire the land, to acquire the resources. तेनु एथर कोटा हमर थिला तबे correct कोटा हला one only. This is the correct answer. अच्छा. With reference to Vedic period, consider the following statements. The Vedic people were predominantly called the nomadic people. Vedic people तो nomadic न थिले? Nomadics कहीं थिले इसमाने? They are agriculture. इसमाने depended upon they depended upon agriculture. अच्छा. Nomadic माने nomads ना nomad माने those who moved from one place to another ना nomad मानकर मेन थिला कोन से माने they moved from one place to another in search of plain lands grazing lands का ताकर पशुपालन सारा करूथिले एग्रीकल्चर भी करूथिले. Nomads माने जे जाजाबर those who moved from one place to another they are known as the nomads. They did not settle in a particular time for all times to come. एठी रहिले गोटे जगह जो आर्यन माने आसीबार कारण कोन जो हरप्पन सिविलाइजेशन जते थिला ता परे जो आर्यन सिविलाइजेशन बा वैदिक सिविलाइजेशन आर्यन माने दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया देयर ओरिजिनल होमलैंड और सेंट्रल एशिया रु से माने कास्पियन दे रिमेन एलोंग द कास्पियन सी मंगोलिया सेंट्रल एशिया कास्पियन सी सेठी से माने थिले से माने 1500 बीसी बेले को दे एंटर्ड इनटू इंडिया काहे की बिकॉज़ दे डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर दे डिपेंडेड अपॉन एनिमल हॉर्डिंग सेति में ताकर आवश्यकता कोन थिला ग्रेजिंग लैंड्स प्लेन लैंड्स कल्टीवेबल लैंड्स रिवर वैली एरिया ए सब जिंसर आवश्यकता थिला दे केम इन गोटे जगह रे सेटल करि गले किछि दिन सेटल कला परे द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इट डिक्रीजेस और प्रोडक्शन बेसी हुएनी ग्रेजिंग लैंड्स भी लैक ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स भी हुए गोरु गाई सब चाष जमी खाई घास खाई जाते आ तांको मिलेनी फोडर मिलेनी तेनु से माने दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ प्लेन लैंड्स ग्रेजिंग लैंड्स कल्टीवेबल लैंड्स की फर्टाइल लैंड्स की रिवर वैली एरिया ए सब तेनु से माने दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किंतु कहूची ऋग्वेदिक पीपल वे आर प्रिडोमिनेंटली कॉल्ड द नोमैडिक पीपल से माने नोमैडिक नथिले नोमैड माने चाष कर नथाते नोमैडिक पीपल से माने ए माने थिले दे डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर दे डिपेंडेड अपॉन एनिमल हॉर्डिंग ऋग्वेदिक पीपल
जीवजंतु पालुथिले और चाष कृषि कार्य करुथिले द ऋग्वेदिक पीपल वे आर प्रिडोमिनेटली कॉल्ड द नोमैडिक पीपल एटा करेक्ट कि नहीं द ऋग्वेदिक पीपल से माने थिले प्रकृत रे ऋग्वेदिक पीपल दे आर कॉल्ड द pastoral पीपल कौन एनिमल्स दे हंटेड एनिमल्स जीवजंतु पालन करथिले पास्चर लैंड ताका में दरकार पशुपालक से माने थिले तेनु पशुपालक जेहेतु थिले सेमानकर प्लेन लैंड्स दरकार ग्रेजिंग लैंड्स दरकार पशुपालन करिया पई सो दे केम इन सर्च ऑफ दैट एरिया एंड दे फाउंड इन पंजाब रे एसु जिनिस देखि देले अच्छा मुख्यतः खंजाड़ी लोक भाबे छाड़ द ऋग्वेदिक पीपल आर प्रिडोमिनेटली कॉल्ड द नोमैडिक पीपल दे आर नॉट द नोमैड्स दे आर द pastoral people अच्छा गाभिस्ती a term often mentioned in the is associated with the sowing and harvesting practices गाभिस्ती पुनी कौन गाभिस्ती माने कौन Gabhisti, a term often mentioned, is associated with the sowing and harvesting practices. This is wrong. Gabhisti माने कौन टू कैप्चर द काउज गाई हूँ धन संपत्ति गोटे गंता घर बोली विश्वास थिला दैट इज नोन एज गाभिस्ती गो पालन करबा गाई रखिबा से मानकर हाँ गाभिस्ती So Gabhisti, a term often mentioned, is associated with the sowing and harvesting of practices. No, सेटा होची कोन Gabhisti meaning search for cows, indicating that cows are the most important form of wealth. तेनु से माने गो पालन cows are important form of wealth. So Gabhisti, a term often mentioned, is associated with the sowing and harvesting practices. No, cows are important form of wealth से consider करथिले. Gabhisti, a term often mentioned, is associated with an important form of wealth. हैला तो एटा this is not correct. Sowing and harvesting of practices ताको Gabhisti बोली कह जाउ नथिला ना बुझिलानी आउथरे कह दउछि ऋग्वेदिक पीपल एटा बुझिला predominant they are the pastoral they are not nomadic people they are the pastoral people एटा हमर एटा भी रॉन्ग आसिला the Rigvedic people had very little knowledge about agriculture and were mainly dependent upon hunting and gathering एटा भी रॉन्ग हे जिवो तबे से माने हंटिंग गैदरिंग तो नथिला ताकर एग्रीकल्चर थिला they are mainly dependent on hunting and gathering no so this is also wrong तेनु कोन हबो एटी गोटे कन्फ्यूजन अछि एटी गोटे कन्फ्यूजन आसीबो how many of the above statement is are correct आमे तीनटा रकडी रॉन्ग देखि देले यदि all three बस ठीक अछि यदि इनकरेक्ट थिला एठी ताले all three केते माने गोटे माने केते कंफ्यूज करछि एठी देखो ई जिंसटा यदि इनकरेक्ट ऑल थ्री आर इनकरेक्ट यदि करेक्ट ताले नॉन ऑफ दिस करेक्ट हैला मीनिंग सेम नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट एंड ऑल थ्री आर इनकरेक्ट सिकिन पचार छी हमकु करेक्ट केतेटा अछि बोली कि नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट सेही मूवमेंट रे सेति की माइंड ता अलर्ट हवार अछि अलर्ट रहिवार अछि Next question को जीवा with reference to the Rigvedic period consider the following statements. Question number 14. Statement 1. The king's post had become hereditary during the Rigvedic period. 2. The Sabha, the Samiti and the Vidhata were the kin-based assemblies which exercised deliberative, military and religious functions. 3. The king appointed an officer for administration of justice after consultation with the priest. How many of the above statements are correct? First देखिबा
The king's post had become hereditary during Vedic period. Kingship was hereditary. It is correct. Kingship was hereditary. The Sabha, the Samiti, and the Vidhata were the kin-based assemblies which exercised deliberative, military, and religious functions. এটা correct কি नहीं? Question number এটা 14. এটা correct কি नहीं? Kin-based assembly कौन? এটা hereditary नुह. এটা kingship was hereditary. But Sabha and Samiti यार जो माने member थिले, it is not hereditary. It is kin-based assembly. तांका जो relative थिबे, they could become the member of the assembly, which exercise deliberative, military, and religious function. Assembly ର function ଟା ରହିला एथिरे. सभा समिति विधातार function रहिला, but it is a kin-based assemblies. सभा and समिति, सभा होची कोन? जो माने only the nobles जो माने थिले, rich people जो माने थिले. समिति it is open for the common people. समिति, सभा and समिति. आ विधाता कोन? सभा समिति and the विधाता. विधाता हम तो सभा समिति पढिचंती माने अर्ली वैदिक एज रे. सभार मेंबर्स थे जो माने रिच और नोबल्स और समिति रे थे तो कॉमन पीपल. अच्छा हाँ देखिए हमें इट इज ए कीन बेस्ड असेंबली व्हिच एक्सरसाइज डेलिबरेटिव मिलिटरी एंड रिलीजियस फंक्शंस. एटा करेक्ट अछि. The king appointed an officer for administration of justice after consultation with the priest. The Rig Veda does not mention any officer for administration of justice. Administration of justice नथिला माने कौन से ऑफिसर नथिले ताले कहा पाखे थिला administration of justice? King. बुझियो जे the king appointed an officer for administration of justice after consultation with the priest. It is wrong. एटा भूल. The king appointed an officer. एटा नथिला. The judicial power it remained in the hands of the king. The Rig Veda does not mention any officer for administration of justice. ताले को माने जो एंटी सोशल एक्टिविटीज होतिला तापरे के नजर रखुथिले? Some officer must be there who are appointed by the king. The king appointed an officer for administration of justice after consultation with the priest. This is wrong. पुरोहित तो मोस्ट पावरफुल भी थिले माने अर्ली वैदिक पीरियड रे पुरोहित मोस्ट पावरफुल थिले with the माने concern of the consultation of the priest राजा जहा करूथिले administration. किंतु एता पचारुची the king appointed an officer for administration of justice. This is wrong. राजा अपॉइंट करनथिले ताले कहा द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लोकन को मिलिबो जदि किछि इनजस्टिस होउतिला राजा केमति खबर पाउथिले जदि राजा निज हाथ रे जस्टिस रखिथिले ना स्पाइज मानक द्वारा से खबर पाउथिले. सो द किंग अपॉइंटेड एन ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विथ द प्रीस्ट. एटा नुह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पई कोनसे ऑफिसर अपॉइंटमेंट नथिला अर्ली वैदिक पीरियड रे. So, आम तार आंसर कोटा हला तेबे the king's post become hereditary. It is correct. The Sabha, Samiti and Vidhata were the kin based assembly. It is also correct. The king appointed officer for the administration of justice. No. The king appointed the spies who gave the information to the king if any injustice is there. The king appointed officer for the administration of justice नथिला किंतु दूतों को द्वारा से सब खबर पाउतिले. ताले इथर कोटा हला correct. Only two, 1 and 2. Only two. Only 2, 1 and 2 both are correct. ठीक अछि 1 and 2 correct. तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. तेनु दिन को दिन क्वेश्चन टा केते टफ होछि सेटा देखिबार अछि. हाँ हाँ ना आम जो एका सांगे सब देखुं माने एत गुड़े क्वेश्चन तो पड़ोनी ना
आम एका संगे जेहेतु हिस्ट्री खाली देखुं ये पुणी आंसिएंट हिस्ट्री पुणी अच्छी पुणी 2-3टा चैप्टर को लेकर अच्छी माने आंसिएंट तो बहुत जिन अच्छी आम केवल 2टा खंड माने हरप्पन सिविलाइजेशन वेदिक एज महाजनपद से अच्छी भर हाँ से पर्यटन थी तेणु यही भितर 3टा क्वेश्चन होता आसपे हाँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the latter Vedic period consider the following statements. In the latter Vedic times, the Rigvedic tribal assemblies lost importance and royal power increased at their cost. Women are not permitted to sit in the assembly. The king's post remains hereditary during this period and there were no traces of election. Latter Vedic period कौन change आस्थिला? In the latter Vedic times, lost importance and royal power increased at their cost. এটা करेक्ट अच्छी ना इनकरेक्ट अच्छी क्वेश्चन हम पचारछि हाउ मेनी आर करेक्ट. In the latter Vedic time, the Rigvedic tribal assemblies lost importance and royal power increased their cost. In the latter Vedic times, the Rigvedic tribal assemblies lost their importance and royal power increased at their cost. In the latter Vedic period रे Rigvedic assembly कहीं की थीबो? latter Vedic period रे जो ऋग्वेदिक असेंबली सभा समिति जो थिला अर्ली वेदिक पीरियड रे लाटर वेदिक पीरियड रे तार इंपोर्टेंस ता हरिला से हां एटा ठीक अछि बस दिस इज करेक्ट. वुमेन आर नॉट परमिटेड टू सिट इन द असेंबली इट इज आल्सो करेक्ट. वुमेन आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग लाटर वेदिक पीरियड इट इज बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम supremacy of the Brahmins. The power and position of the status of women it are deteriorated later Vedic period. Then women are not permitted to sit in the assemblies. They be correct achi. The king's post remains hereditary during this period and there were no traces of election. एटा किंतु थिला इलेक्शन later Vedic मनकर आम जो कहते देख 6th century BC आम जो पढ़ले जनपद महाजनपद ता भितर थिला कोन रिपब्लिक थिला. रिपब्लिक वाज आल्सो ए किंगडम. रिपब्लिक इट इज भजी एंड मल्ल दे आर द टू रिपब्लिक्स टेकिंग टुगेदर सम ऑफ द कन्फेडरेसीज. तेनु से दैट वाज भजी वाज आल्सो ए किंगडम बट इट्स हेड ऑफ द स्टेट ही वाज इलेक्टेड. नहीं लाटर वेदिक रु स्टार्ट हेथिला 6th century BC रे सेटा थिला. तेनु महाजनपद हाँ महाजनपद महाज 6th century पूर्वटा होची वेदिक एज में अछंती ना एटा लाटर वेदिक नो के लाटर वेदिक रे कंटिन्यूड अप टू 6th century BC ना एका जिंस लाटर वेदिक अप टू 6th century हाँ नहीं 6th century माने ही लाटर वेदिक एज. लाटर वेदिक रा सरला परे तापरे बुद्धिज्म जैनिज्म आसिला 6th century BC. बुद्धिज्म रिलीजियस हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री ला जनपद महाजनपद सेम टाइम रे 16 महाजनपद आउ बुद्धिज्म जैनिज्म एटा होची पॉलिटिकल हिस्ट्री रे चेंज आसिला 16 महाजनपद काशी कुश अंग मगध चेदी वंश भजी मल जहा जहा से सब हेले पॉलिटिकल चेंज. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 ग्रेट स्टेट्स 16 महाजनपद. एट द सेम टाइम देयर आर द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. बौद्ध धर्म जैन धर्म से 6th century BC रे हेतिला. सो the king's post remains hereditary during this period and there are no traces of election. एटा होची भूल. There was traces of election. जो रिपब्लिकन भजियान मला पढिले ताकर जे हेड ऑफ द स्टेट ही वाज इलेक्टेड बाय द पीपल. तेनु एठी इलेक्शन थिला लाटर वेदिक एज रे 6th century BC बेडू थिला इलेक्शन. से लाटर वेदिक एज कथा पचाउची इन द लाटर वेदिक टाइम्स. एटा लाटर वेदिक टाइम्स. दिस इज आल्सो इन द लाटर वेदिक टाइम्स. So there was election. Traces of election. The king's post remains hereditary during this period and there were no traces of election. No, there was traces of election. So election thila. So this is wrong and these are correct. कौन पचाची? How many are correct? Only 2. Women ना हाँ 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 एती रहा खाली
ए जो ड्यूरिंग दिस पीरियड king's post remains hereditary during this period and there were no traces of election. Election the king he was also elected later Vedic period. Later Vedic age it continued up to 6th century BC, 1500 BC to 600 BC. বুঝতে তো 1500 BC to 800 BC or 1000 BC early Vedic period. From 1000 BC to 600 BC that later Vedic period. Then later Vedic period रे kingship was hereditary. एटा ठीक अछि राजा hereditary थिला during later Vedic period. किंतु there are no traces of election. एटा नुह election was also conducted. अच्छा तारे हमर आंसर कोटा हला आंसर कोटा हला हाँ हाँ किंतु मु एबे आ गुटे को बहिरे पढिथिली लोक माने जा को चाहिबे से राजा को इलेक्ट करिवे हाँ द हेड ऑफ द स्टेट ही इज इलेक्टेड रिपब्लिक मान द सेया भजी और मल्ल these are the two republics in 6th century BC or in the later Vedic period. So the hereditary thila kingship remains hereditary during this period and there was also election. बुझी how many of the above statement is correct? It hala only 2, 1 and 2 ना हाँ there are no traces of election. ठीक अछि only 2. Question number 15 जदि बेटा केते समय जाय चलिबो माने आधा क्वेश्चन जदि पढि देलो जानलो जे मोर क्लास अछि केते बेले हो ठीक आउट कर दो क्वेश्चन ठीक हाँ हाँ गण संघटा से तो इलेक्टेड द हेड ऑफ द गण इज इलेक्टेड हाँ अच्छा तापर हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा with reference to the later Vedic period consider the following statements. During this period during later Vedic period the society came to be divided into 4 varnas. The Sudras were deprived of the sacred thread ceremony and the recitation of the Gayatri mantra. The position of women improved during the later Vedic period and they were allowed to recite the Gayatri. Eta bahut eta sabuthar easiest eta mane easy no easiest question. During this period the society came to be divided into 4 varnas. हाँ एटा समस्त ठीक थियो द शूद्रस आर डिप्राइव्ड ऑफ द सैक्रेड हाँ देखो सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी समस्तंकर थिला ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र बट शूद्रस आर डिप्राइव्ड ऑफ द सैक्रेड सेरेमनी ड्यूरिंग later Vedic period जो उपनयन सेरेमनी जो हम कहउछंती उपनयनटा होची जो पैता यज्ञ पवित्र ग्रहण करिवा व्रत घर जोटा कहउछंती उपनयन सेते में गर्ल्स मानकर भी होउतिला उपनयन irrespective of male and female उपनयन समस्तंकर हाँ समस्तला किंतु later Vedic age रे जो चेंज आसिला it is because of the supremacy of the Brahmins. The Sudras are deprived of the sacred thread ceremony and recitation of the Gayatri mantra. एटा भी करेक्ट अछि. The position of women improved during the later Vedic नहीं and they were allowed to recite the Gayatri mantra. Position of women deteriorated. एटा समस्त ठीक थिबो ताले कोटा हमर ठीक हैला हाई only 2 1 and 2 only 2 एटा सबुट माने इजीएस्ट क्वेश्चन तापरे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को
एटा बुझिला तो एटा इजी अछि हाँ से माने अर्ली वैदिक एज रे दे कुड डिसाइड द मंत्रस along with their husband they participated in the functions किंतु later वैदिक एज रे they are not allowed they are confined within the four walls of the houses सेनको अनुमति मिलला नाही वेद पाठ करिया पे अनुमति मिलला नाही सभा समिति जाको अनुमति मिलला नाही they are not allowed to participate in the जो sacred sacrifice होम यज्ञ रे तांको बसिया पे अनुमति मिलला नाही later वैदिक एज रे so with reference to the ancient Indian period of the 6th century BC consider the following statements Mahapadmananda from the Nanda dynasty expanded the Magadhan empire towards the northwestern region of the Indian subcontinent. 6th century BC is renowned for its ochre-colored pottery ware culture. Achha. In this era, the Republic of Bhaji implemented a democratic structure that allowed both women and the Kamakaras to participate in the assemblies. By the end of his rule, Mahapadmananda successfully subjugated all the Ganas and republics. It was 17. Achha. Statement 1. Mahapadmananda from the Nanda dynasty expanded Magadhan empire towards the northwestern region of the Indian subcontinent. How many are incorrect? This is correct. Mahapadmananda. Mahapadmananda from the Nanda dynasty expanded the Magadhan empire towards the northwestern region. Achhi. Northwestern region माने कौन थिला? अफगानिस्तान, सिंध, तापर आसिला आउ कौन थिला? ना एपट एरियाटा नॉर्थ वेस्ट हाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट एटा ठीक अछि तापरे ऑप्शन नंबर 2 एटा क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 ओक्रे कलर्ड पोटरी ना एटा कोड गला हाँ the 6th century BC is renowned for its ochre colored pottery ware culture ochre colored pottery कौन ताको हमें माने अति इजी रे कहि दी परिबा एटा ब्रोंज एज पोटरी तक हमें कहि दी परिबा ब्रोंज एज कल्चर अच्छा the 6th century BC is renowned for its ochre colored pottery so this statement it is incorrect it is correct eta correct nuho bronze age culture of the Indo-Gangetic plain extending from eastern Punjab to northeastern Rajasthan and western UP 6th century BC is renowned for its ochre colored pottery ware culture it is not correct. In this era, the Republic of Bhaji implemented a democratic structure that allowed both women and the Kamakaras to participate in the assemblies. Kamakaras किए? Kamakaras को माने को कमकार बोली कहउतला एटा तो हां एटा इनकरेक्ट अछि किंतु कमकारास एटा पढिले दिस era the Republic of Bhaji implemented a democratic structure that allowed both women and the Kamakaras not allowed कमकारास माने कौन तो जो ने नहीं लैंडलेस जो माने हाँ जो माने लैंडलेस माने कौन करथिले दे वर्क एज द सर्वेंट्स बा दास तुम जो कहउछ से माने अन्य मान काम करथिले सो वुमेन एंड कमकारास लैंडलेस भूमिहीन जो माने थिले और द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स जो माने कि नहीं जो आमे कहंती माने निजर जमी नहीं अन्य मान जमी काम करथिबे से माने लैंडलेस लेबरर्स हाँ they worked in other lands अन्य मान जमी रे से काम करथिले so in this era the Republic of Bhaji implemented a democratic structure that allowed both women and the Kamakaras to participate in the assemblies एटा ताले कोन हैला ठीक हैला कि भूल हैला एटा भूल हैला एटा this is wrong this is also wrong bronze age
ना ओक्रे कल्चर टा होची ब्रोंज एज रो द 6th सेंचुरी बीसी इज रिनाउंड फॉर इट्स ओक्रे कलर्ड पोटरी वेयर कोची कोची कहि दो एटा होची आंसर 17 स्टेटमेंट 2 एटा होची इनकरेक्ट काहे की ना ओक्रे कलर्ड पोटरी ओसीपी जाओ कहउचंती वेयर द कल्चर इज ए ब्रोंज एज कल्चर of the Indo-Gangetic plain extending from eastern Punjab to northeastern Rajasthan and western UP. तेन एटा 6th century BC रे एटा नथिला तेन एटा रॉन्ग ता पूर्वरु ब्रोंज एज कल्चर सेटा. In this era, the Republic of Bhaji implemented a democratic structure that allowed both women and Kamakaras landless laborers माने to participate in the assemblies. एटा नथिला. By the end of his rule, Mahapadmananda successfully subjugated all the Ganas and republics. एटा करेक्ट कि नहीं? Subjugated all the Ganas and republics. By the end of his rule, Mahapadmananda successfully subjugated all the Ganas and republics. While he significantly expanded the Magadhan influence and conquered many kingdoms, it is not accurate to say that he completely subjugated all the Ganas and republics. Magadhan empire को बहुत expand करिथिले, but he subjugated all the Ganas and republics. एटा नथिला. ताले हमर इनकरेक्ट केटा हला तबे ताले कोठा हबा आंसर पुनी यदि इनकरेक्ट हला 3 ताले आंसर से कोन पचाची हाउ मेनी आर इनकरेक्ट ओनली 3 ठीक अछि केवल गोटे ही करेक्ट हां चारिटा अछि Mahapadmananda from the Nanda dynasty expanded the Magadhan empire towards the northwestern region of the Indian subcontinent. It is correct. 6th century BC is renowned for its ochre colored pottery ware culture. This is not correct. नहीं तो इतने एटा अलगा कर दीची भजी गणेश गणतंत्र राज्य कार्य करथिला एटा भजी सहित एटा मिसे दीची ए दुटा के मिसे दीची एटा समस्त गणराज्य को नुह हैला ओनली 3 हैला आंसर एटा हला 17 तापर देखिबा people perform a variety of rituals when they fall ill. এটা ফল বহুত বড়া কোশ্চেন মতে সব ভাল লাগছিল কোশ্চেনটা people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful, like treating all creatures with compassion. The above statements reflecting belief in humanity are associated with which of the following ancient figures? এটা ইজি কোশ্চেনটা কিন্তু বড়া এই কোটেশনটা বহুত বড়া আছে কিয়ে কাহার থট এমতি থিলা people perform a variety of rituals when they fall ill, when they देखा when we fall ill आमे छुआ को देह खराब होची कोन होची आमे जे भगवान बची दे ताको ये करो कहउचंती केतले प्रेयर करंती रिचुअल्स करंती ये करंती गुणा झड़ा फुंका ये सब रिचुअल्स प्रार्थना गला when the children get married सेतली पूजा पाठ करंती when children are born छुआ जन्म हली पूजा पाठ होची और when they go on a journey यदि बाहर को जाउची जा भल रे जाय पहुंच पूजा करचंती these rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful, like treating all creatures with compassion. The above statement reflecting belief in humanity are associated with which of the following ancient figures? Rishabdev, Mukhali Gosala, na नहीं को हाँ मुखली गोशाला ना सुनिची बुद्धिज्म से रिलेटेड
ना आंसरटा हूँ मौर्यन एम्परर अशोकंकर एटा हूँ अशोकान धम्म अशोकान धम्म एइथिरे से लिखिछन्ती ऑल आर माय चिल्ड्रेन अशोकान धम्म कोथे लिखाई छी ऑल आर माय चिल्ड्रेन समस्ते होचन्ती मोर संतान अशोकान धम्म अच्छा आ गोटे क्वेश्चन एटर क्वेश्चन व्हाट आर द अदर प्रैक्टिसेस कह दूची ना people perform variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when go on a journey. These rituals are not useful if instead people observe other practices. This should be more fruitful. Other practices कौन? Helping others, fellow feeling, तापरे to pay respect to others religion. आमे खाली आम धर्म को न मानी अन्य धर्म को समान दब यदि आमे others अन्य मानक धर्म को if we do not pay respect we do not have then ताले आम धर्म मिल माने ए जो कांसेप्ट एटा होची अदर प्रैक्टिसेस टू पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिलीजियंस ऑफ अदर्स अन्य मानक धर्म को मते सम्मान प्रदर्शन करिबा अच्छा एटा से कहिथिले बीइंग जेंटल विथ आ जो अदर प्रैक्टिस आ कोन थिला बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स जे स्लेव और सर्वेंट तांको प्रति मते हमें सेबडा सहनशील हवा दरकार वी मस्ट बी टॉलरेंट वी मस्ट बी जेंटल टुवर्ड्स देम आ कोन थिला रेस्पेक्टिंग वन्स एल्डर्स अशोकान धर्म धर्म माने धर्म प्रचार नुह अशोकान धम्म द कॉन्सेप्ट ऑफ अशोकान जो रिलीजियन अशोकंकर धर्म प्रति जो कॉन्सेप्ट जो भावना दैट इज अशोकान धम्म सेटा होची कोन टू पे रिस्पेक्ट टुवर्ड द रिलीजियंस ऑफ अदर्स टू पे रिस्पेक्ट टू द स्लेव्स एंड टू द सर्वेंट्स टू पे रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स आ कोन थिला ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन समस्त प्रति दयाशील हवा दरकार सहनशील हवा दरकार कंपैशन थिबा दरकार एसु जिनसटा गिविंग गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स एंड monks अशोक ही गेव डोनेशन और गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स टू द monks टू द भिक्षुस टू द destitute टू द पुअर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरीज ता जन्मदिन मानकर अशोक समस्त दान करथिले ब्राह्मण मन दउथिले भिक्षु मन दउथिले आ बौद्ध सन्यासी मन दान करथिले ए सब सो वी मस्ट गिव डोनेशंस वी मस्ट गिव गिफ्ट्स टू द ब्राह्मण्स एंड द monks एगुडा जो अदर प्रैक्टिसेस If one praises one's own religion while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. निज धर्म को बहुत प्रशंसा करिबा अन्य मानक धर्म को यदि हमें बदनाम करिबा ताले हम निज धर्म को हमें बदनाम करछंती दिस कांसेप्ट दैट इज इन द अशोकान धर्म भीतर जो प्रिंसिपल सो दीज आर इट कंपेयर द अबव स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग बिलीफ इन ह्यूमैनिटी अशोकान धर्म होजी कोन मानविकतार धर्म द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी द बिलीफ in humanity are associated with which of the following ancient figures ऋषभ देव नो गौतम बुद्ध तो गले मौर्यन एम्परर अशोक मखाली गोशाला he was also he belonged to buddhism बौद्ध धर्म रा मखाली गोशाला बोधे से जो हमें जो आनंद उपाली हां गौतम बुद्धंकर जो शिष्य डिसाइपल्स से मान के भीतर थिले मखाली गोशाला सो दिस इज द करेक्ट आंसर मौर्यन एम्परर अशोकंकर ये होसी प्रिंसिपल अच्छा तापरे हमें जीवा आ गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन को